Mangal Pandey, Jhansi Ki Rani, all that stuff. The very first revolt against Britishers happened in the year 1857. Yeah. Although it was an unsuccessful event, but it made people realize three things. You can stand up for yourself. There's something wrong that needs to be changed, and it can only happen when all of us come together. Taking upon those learnings from that revolt is why what we do here, wow, is called 1857. कितना सोचा है भाई इसने? या नाम रख दिया उसके बाद सोच रहा होगा क्या ही कर So guys, our guest for today is a guy who is responsible behind an enterprise named 1857, and basically what he does is he takes many unemployed and lonely people together and charges them to be unemployed and lonely at his place. And guest for today is 95% Australian, and the only 5% thing Indian about him is his surname Agarwal. But property के लिए सब करना पड़ता है. मैं भी अठवानी से रहा हूँ. And last but not the least, he is half the brains behind the enterprise 1857. So now you know that it only takes half a brain to create something like 1857. But on a more serious note, our guest for today is one of my college seniors, a friend, and the brains behind one of the Raipur's coolest enterprise and communal space, 1857. And we're really, really happy to have him. He's none other than Mark Agrawal. Hey! Thank you guys. Thank you so much. So Mark, how are you feeling after that wonderful introduction? I've never thought I would be introduced that way ever in my life. Throughout my life, although I had been getting questions about my name, which people are not able to digest. Yeah, I need to know this. What your name, bro? Please. Yeah, that's actually very intriguing. Mark, naam kaise pad gaya? So my dad is a very creative person, and when he was in college, he had a best friend, and he was Christian. Okay. And they're still very good friends, yeah. So back in college itself, they made a pact that they would name their kids after the other religion because his best friend is Christian, right? So that's why my name is an English name, Mark Agrawal. And his name is Mahesh. Marwadiyon mein to ye chalo. So they have two daughters named Anushka Malishka. Oh, nice. Anushka is a nice name. Yeah. आपको तो लगेगा ही. They were Christians, so now they must be Muslims now. No. Sorry. Come on, why? No, Advani का मिशन है लोग कि हमारा शो वो कैंसिल करवाएगा चाहे जो हो जाए. तो क्या हुआ? नहीं केरला में क्या हुआ? Because most of the Christians reside in Kerala ना, तो बीच में से वेव आई थी कि सब वहाँ मुस्लिम जाके कन्वर्ट कर रहे थे. Okay. तो स्टीरियोटाइप को जब तक अपन ऐसे प्ले नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा. सही बात है. Advani being अबे this is very tamed version of Advani. Yeah. You should see him out in the open. You'll freak out, bro. But chalo, everything said and done, we had like a few burning questions. हमारे से सीने में दौड़ रहे थे कि first of all tell us about 1857. What is 1857? भाई तो कुछ भी नाम रख सकता था ऐसे 1857 ही क्यों? 185. हाँ, बहुत ये मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी हमेशा से 1857 क्यों? As I love to say 1857 ही क्यों? So first of all, the name had to be something which makes people curious. तुम curious हुए? First step solved. Right? So the name, my vision of having a name was simple. It needs to be simple,
easy to pronounce to everyone, short. very short, and yet it should make people curious about why this, right? 100% father's son. चार वर्ड का नाम जरूरत नहीं है. छोटा नाम अग्रवाल कौन सा मार्को हमको भी Now, the reason behind the place was a place where people can come, have fun, do things जो वो कॉलेज में करते थे. क्योंकि कॉलेज के बाद ऐसा होता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आती है, काम धाम में लग जाओ, बीवी बच्चे हो जाते हैं, लाइक नॉट टॉकिंग आवर एज बट इन जेनेरिक life cycle of people. Then just life goes on and you dive so deep into your responsibilities that well, people say you grow, but essentially you change in a way to fit the society's norms. Right? I reached a point in my life where I started to see that I'm changing. And I loved myself, man. So I was like, something needs to be done because the kind of work that I was doing involves a lot of interaction with labor. और labor से काम करवाने के लिए you have to behave a certain way. मैं इतना soft spoken बंदा, labor मेरी बात को सुने ही ना तो you have to shout at them, you have to be angry and all this thing. When you come back home, bro, sorry to anger. Bro, the first time so Atwani owns a nursery, okay? Yeah. 5. हाँ, अरे 5 nursery, ठीक है. तो मैं इसके नर्सरी में गया and he also has to deal with labor क्योंकि अब पौधे को ये सब करना है तो he has a staff quarter and वो वहीं रहते हैं. तो he sorted their accommodation, which means खरीद लिया है इसने उनको. Bro, he talks to them as if उसका कोई पर्सनल हार्म किया. उसका एक बंदा है मैनेजर शत्रुघ्न मैं बोल रहा हूँ बीच रात में उठ जाता होगा डर के मारे कि अठवानी भैया आ गए, ऐसे बात करता है. मेरे को लगा कि तेरी बहन को छेड़ा है क्या शत्रुघ्न ने, क्यों चिल्ला रहा है उसपे. तो डील के लेबर से यार में वो बेचारा इतना अच्छा बंदा है, चिल्लाते जाएगा पूरे समय उसपे. उसको अच्छा रखा गया है वो. देखो मैं क्या कहानियां बताऊं, तू डील नहीं किया लेबर से ना यार. बट द पॉइंट बीइंग आई गेट व्हाट यू मीन बाय लेबर. Yes, and I didn't like that thing about myself because I had been a very creative person and मुझे वैसा कुछ एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था. I am into music, dance, I love acting, time to time I write, I love photography, I love cooking, food, what not, everything creative, you name it, I would be down to do that thing. अच्छे से क्या करता है तू? पहले डिस्क्लेमर दिया आज यू थ्राइस ना. हाँ चल बोल. So I was like, there needs to be a place where people can go back and unwind, recreate, create, and just have fun, entertain themselves, meet new people, like-minded people, bond over things they're passionate about. So, in a way, in itself, I'm talking about खुद से खुद की आजादी. And that's what happened in 1857, the first revolt of 1857. Wow. Fuck, I thought it's time कि 1857 को यानी 657 को आ जाओ सब. No, that's very thoughtful. 657 को आ जाओ सब. तू तो और बड़ा वाला यार. No, इसका कोई एक पोस्ट था कि see you at 1857 at 1857. Yeah, we do that quite often. Yeah, so I thought कि ऐसी टाइम स्टैम्प के लिए बोल दिया. Yeah, so thoughtful है यार, ये तो बड़ा thoughtful है. महात्मा गांधी, sorry, मंगल पांडे, झांसी की रानी, all that stuff. The very first revolt against Britishers happened in the year 1857. Yeah. Although it was an unsuccessful event, but it made people realize three things. You can stand up for yourself. There's something wrong that needs to be changed, and it can only happen when all of us come together. Taking upon those learnings from that revolt is why
what we do here, wow, is called 1857. कितना सोचा है भाई इसने? या नाम रख दिया उसके बाद सोच रहा होगा क्या ही कर What happened in कोई तो करता नहीं। Oh fuck. Bro, चल ठीक है, you had this idea कि मेरे को I want to create a space जहाँ I can be comfortable and I'll find like-minded people where they can be comfortable, they can reminisce their college and have a good time. But getting people on board, getting the space you need, मतलब चाहत को तो देखो you had to get her on board ना, तो वो कैसे था मतलब it was 100% your idea कि दोनों का साथ में idea था, कैसे हुआ? It was majorly conceptualization of the entire place came from You. from me, but the execution part is step by step through the beginning. Chahat has helped completely. If she was not here, then we would not be here, whatever it is. Bro, but ऐसे देखने में from the outside it looks very easy कि यार क्या है, जाओ games खिला दो, बकचोदी करना है, एक जगह ही तो चाहिए, जगह ही तो चाहिए, and then बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा. But like according to you, like how difficult has it been, bro? Like I'm pretty sure it would have been very difficult क्योंकि मतलब एक तो तेरे को back to back कुछ ना कुछ नया लाते ही जाना पड़ता है. Moreover, like bro, हर किसी का एक social battery drain होता है कभी ना कभी, and you have to be so fucking social all the time. Yeah. What like, and also कि bro ये हुआ नहीं था रायपुर में पहले कभी. Yeah. हाँ. एक तरीके से तो ये कुछ नया चीज लेके आ रहा है तू. Bro, was mutuals before? No, him or after this, after him. Oh, so है ना? you were the first. तो वो कैटलिस्ट होना चेंज का, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना, कि आइडिया भले सबके दिमाग में होगा, किसी के पास हिम्मत नहीं थी टू पुट द मनी where their mouth is. और तूने वो किया तो तेरे लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा. फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज है थोड़ा यहाँ पे तेरे को. Well, yeah, but we had our way around it. Before finalizing everything that we want to step into it, we did a market research. We understood the mindset of the people. We had to understand whether this idea, the concept would work or not. So it's genuine कि आप एक थोड़ा market research करोगे. But अब तूने कैसे किया market research? We made a Google form. Okay. And we got someone on board who did it for us. Okay. They reached out to more than 300 people. Okay. Circulated the form, asked them to fill it up. क्या आप डिप्रेस्ड हो? मैं भी आ जाऊँ. फ्री टाइम में डिप्रेस्ड हो? मेरे पास भी फ्री टाइम में मैं भी डिप्रेस्ड हूँ. तुम लोग ऑडियंस सेगमेंटिंग कर रहे हो तो यही सोचो. हाँ. वेलापंती करने के लिए लोग कहाँ है? आर्टिस्ट तो मतलब वेले हो गए. So yeah, and ever since a lot has happened here. 1857 has become a platform for lot of people to boost whatever they are doing. चाहे वो bakers हैं, they're getting a platform, they're getting recognitions. चाहे वो musicians हैं, they find other fellow musicians. They form bands now, and now they're performing commercially. So artists वेले थे, but हम उनके वेलेपन को दूर कर चार्ज कर रहे हैं. नहीं यार, आर्टिस्ट से चार्ज नहीं करते हैं. But you were telling about this one band, no bro, that formed at 1857 is now like a very popular band. Yeah. City. What is that about? So that's called Pause, and it happened after 1857. A lot of people, they knew kind of each other, but it's only when they came and performed together at 1857 they had a better idea कि they have that sync and they can go forward with it. 1857 का वन डायरेक्शन बनाया है. सही है ब्रो. मेरे को एवरीथिंग असाइड, अभी जब इंडिया आने के बाद इतनी जनता देख के ना मेरी तो थोड़ी सी फट लेती है ब्रो. मतलब आई एम सो लाइक व्हाट डू यू से, मैं इतना एंग्शियस हो जाता हूँ इतने ज्यादा लोगों के सामने और एक साथ इतनी भीड़ देख के. हाउ डिड यू वर्क योर वे अराउंड ब्रो? बिकॉज मैं अभी तक 2 इवेंट में आया हूँ, तू एक में आया. And the way you keep your energy level so high to interact with people and like just make everybody feel so comfortable, like
how do you do that though? Like, Do you have it's any? natural. It's talent. Original answer. Do you keep certain things in mind? Is what I mean. Yeah. No, yeah, see, one thing is very clear. Whenever we decide to do a particular event, the very first question is, हम ये करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? हमको ये करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगर हमको मजा आता है तो हम करते हैं उस चीज को. अगर हमको लगता है कि नहीं यार हमको मजा नहीं आएगा, then we don't put too much brains about it. अगर कोई और आता है हमारे पास कि यार ये इवेंट कराओ, हम फिर से वो सोचते हैं हमको करने में मजा आएगा नहीं आएगा. अगर हमको मजा नहीं आएगा, भाई तू कर ले. Our place is available for you. You come in, you do your thing, whatever you want to. So yeah, we only do things that we feel comfortable doing. We are not doing anything out of responsibility, out of that cage, whatever we were talking about. But you meet new people every day. Almost every day you meet new people, and not everyone is interesting to talk to. Fair enough. Straight. But I've seen you keeping your calm, talking to everyone like they are interesting, like they have some gravitas in their talk. So I want to know, how do you do it, bro? एक social barometer होता है जो मेरा भी है उसका भी है. उसके नीचे ना फिर मेरे को लगता है अभी आदमी चूतिया बात कर रहा है, हटा. और वो मेरे शक्ल पे दिख जाता है ब्रो, एंड तेरे में नहीं दिखता है. हाँ, एंड यू कीप इट वेरी कि अरे यार ये तो इतना जेन्युइन बंदा है. आदमी तेरे से इम्प्रेस होके जा रहा है कि यार मैं तो चूतिया बात करता हूँ, पूरी दुनिया मेरे को ये बोलती है, ये आदमी मेरे से फिर भी बात कर रहा है. मतलब हमारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट था सेकेंड ईयर में, इमोशनल इंटेलिजेंस. मैं अच्छा था उस सब्जेक्ट में. नहीं, बट हाँ तेरे को ऐसा नहीं लगता अब मेरा ड्रेन हो गया, अब मैं इससे ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता, अब मेरे को करना ही नहीं आज का बात? Sometimes I feel that way, and it has happened. I would not deny it completely. It has happened at times. It's not that whatever you're saying is true, but it's not that I have 100% track record in doing it. So yeah. Okay. मेरा एक ये क्वेश्चन था कि ब्रो, so you and Chad got together and you wanted to like make this idea come into reality. Yeah. But moving forward today, you have somebody to take care of your social media. You've built a team around it. Yes. So how did you go about building a team together? Like, because अगर मुझे, if I want to start a business, the biggest challenge that I face is कि यार like-minded लोगों का team कैसे बनेगा? बहुत मुश्किल. मिलते ही नहीं है ब्रो. हम लोग को सोचना था कि भाई इंटरेस्टिंग लोगों को बुलाते हैं, यहाँ पे हमको इंटरेस्टिंग लोग ही नहीं मिल रहे. हम दोनों ऐसे बोल रहे थे यार, मार खा बोल दिया तो ठीक है, तो एक और एपिसोड हम दोनों को बकचोदी करनी. दिस वाज लेजिट आवर थिंकिंग. कल शाम को हम उसी में बैठ के हम लोग यही कर रहे हैं, ब्रो हम क्या इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग लोग को जानते ही नहीं है क्या? मतलब ऐसे हैं इंटेलिजेंट लोग, पर उनका इंटेलिजेंस उस चीज में नहीं है जिस चीज में हमको चाहिए. So building a team was not easy, and I would say even today, majority of the people in the team are freelancers for us. Okay. But it's just that we stumbled in our journey with these folks and we joined hands. Start कैसे किया हमने? We of course काम तो करवाना पड़ेगा. So we got in with an agency. An agency से हम काम करा रहे थे. Like social media. Yeah. Okay. Right. So it was just Chahat and I, and then a social media agency who was handling other stuff. Okay. And with time we realized कि okay, now we can probably know someone who can come and work with us. Freelancers पे shift हो सकते हैं instead of agencies. So did that. आपको जो काम चाहिए, हर काम के लिए आज कहीं ना कहीं एजेंसीज है, चाहे वो इन द सिटी हो या चाहे वो आपको बाहर से मिले, बट यू वुड ऑलवेज फाइंड समवन टू कम एंड डू हेल्प यू आउट, हेल्प विथ योर वर्क इन अ वेरी प्रोफेशनल वे. सो दिस शुड नेवर बी अ बैरियर फॉर यू टू स्टार्ट समथिंग. स्टार्टिंग में पैसे ज्यादा लगेंगे, डू दैट, but when you show the work you are doing, people would already attract to you. Right? Yeah. Then always keep communicating with people about what you're looking for.
Always know what's your ask. Yeah. Always know what's your ask. Yeah, I'm looking for a graphic designer. And whenever you're meeting someone, that would just click. Whenever you know the right person who could solve your ask. So yeah, always be clear about what is your ask. What is the vacancy in your entire business you're looking for. वो तो है यार, एंटरप्राइजिंग तो है अपना मार्क. ये तो यार ये मेरे को पता बेसिकली दिस इज अ कम्युनिटी 1857 इट्स नॉट जस्ट अ स्पेस इट्स अ कम्युनिटी. कितना मुश्किल हुआ ये कम्युनिटी को डेवलप करने में क्योंकि स्टार्टिंग में इट्स नॉट पॉसिबल कि तुमने जगह खोल दी और लगातार लोग आते गए है ना. टाइम तेको भी लगा था जब आई रिमेम्बर व्हेन यू स्टार्टेड गोमू ही संभाल रहा था मेरे ख्याल से तुम लोगों का काम और मैंने वो पोस्ट देखा जहाँ रेट्स आ रहे थे कि इतने दिन के लिए ये एरिया इतने में मिलेगा इतने दिन के लिए. तब एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी. डाउन द लाइन तूने फिर खुद एक्टिविटीज चालू की और वो की. तो वो कम्युनिटी बिल्डिंग एक तो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या चैलेंजेस तूने फेस किए उसमें और क्यों आज के डेट में क्या तेरे को लगता है ऐसी कम्युनिटीज होना जरूरी है शहर. कितना इम्पोर्टेंस है एक कम्युनिटी का एक सोसाइटी में एक ऐसी क्रिएटिव कम्युनिटी का. डेफिनेटली इम्पोर्टेंट बट आई वुड से मोर देन द कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है. राइट अबाउट द जर्नी. आप कोई भी नया काम स्टार्ट करो वो इमिडिएटली तो होगा नहीं बट यू कीप ऑफरिंग. यू आपको जो करना है आप वो करते रहो. बस पुट इट आउट देयर कि यार आज मैं म्यूजिक नाइट कर रहा हूँ. स्टार्टिंग में 20 लोग आएंगे, फिर 22 आएंगे, फिर 25 आएंगे, 30 आएंगे, 40 आएंगे, 60 आएंगे. वो नंबर धीरे धीरे ग्रो करेगा बट इट्स जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी, बीइंग सैटिस्फाइड with the number you have today and just doing more, continuing it and it will happen. कई बार ऐसी चीज हुई है जब हमने स्टार्ट किया था हमारे कुछ आइडियाज थे जो तब काम नहीं किए. हमने 6 महीने बाद उसको दोबारा कोशिश किया रीपैकेज कर. या एंड इट वर्कड आउट. नॉट इवन रीपैकेजिंग, सेम थिंग, सेम चीज को उठा कि ऑडियंस थोड़ी और रेडी हो गई एक्सेप्ट करने के लिए वो आइडिया. या ब्रो तो तू कह रहा है कि तू सेटल नहीं करना चाहता एंड यू वांट टू कीप throwing shit at the wall and just seeing what sticks and keep on hammering it. तो तेरा vision क्या है bro? Like ultimately, like hypothetically, you can go as big as possible. बोल सकता है कि I'll be like Apple in like next 10-15 years चलेगा. But vision क्या है like bro? The vision is for place where people can just come at the end of their day and do things that they don't usually get to do. So तो अभी भी कर. तो अभी भी हो. इसके ऊपर कुछ नेक्स्ट like गोल is that like कि x number of लोग चाहिए मुझे या मेरे को ऐसा कुछ है मतलब कि नीचे बैंक को हटा के पूरी बिल्डिंग मेरी हो वैसा कुछ या मेरे को और ब्रांच आउट करना है. Yes, expand तो करना है but geographically in other cities around India for now. But always want to keep things cozy, right? जब मैं एकदम कॉर्पोरेट लेवल पर नहीं जाना चाहता. कॉर्पोरेट लेवल पे जाऊंगा तो वो वाइब किल हो जाएगी बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी humane. It's very interpersonal to people. Like you said, people feel that connect, right? Feeling that connection is very important in a community. So never really want to grow things that much. I'm not of a big growth mindset. Not that person. I want to do a lot of small things. I don't want to do something big. This is like a passion project to you. It's a mindset. No. This Yeah. 1857 is like a passion project. No, it's a mindset for me. Okay, elaborate. या ये तो फिलोसफी आ गई कि मुझे मजा आता है सुनने में बहुत मजा आता है. बताइए 1857 माइंडसेट कैसे? 1857 एक Come सोच है. relax, chill out. जैसा मैं वो जो बोल रहा था ना कि fitting the society वाला part, there we have just been defined by the do's and the don'ts, the rights and the wrongs about the journey
एक इंसान की क्या जर्नी होनी चाहिए। 18 में स्कूल, 23 में कॉलेज, फिर जॉब पे लगो, 27-28 में शादी, बच्चे करो, इतना कमाओ उतना कमाओ, ऐसा करो, बंगला लो, गाड़ी लो, बच्चों का ध्यान दो, all that stuff. Then a pathway or journey has been set for you. I'm not asking you to completely defy from that, but what I'm trying to say is take a break from all that. Take a break for yourself. लोगों के पास आज की डेट में अपने काम की जगह है, ऑफिस, फैक्ट्री, व्हाटएवर. लोगों के पास अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए जगह है, घर, राइट? लेकिन व्हाट्स दैट वन प्लेस वेयर यू कुड जस्ट बी योरसेल्फ? अपना कमरा रहता है, लेकिन शादी के बाद वो भी पूरा अपना नहीं रहता. Right. So that personal space is very important. Taking time out for yourself is very important. And this is that mindset. Bro, again and again you're going about shadi. Are you planning to marry soon or? No, I'm अभी तो लंदन में अभी I'm just generalizing things in a way. No, but I'm asking about you specifically. I'm not generalizing. कुछ Are you इरादा planning to marry anytime soon or? Not immediately, समय है. अभी इमीडिएट नहीं सोचेंगे. सोचेंगे यार. बट गुड जॉब ब्रो. मतलब मेरे को तो बड़ा सही लगा ब्रो तेरा इनिशिएटिव. इट्स वेरी वेरी गुड. मेरे को 2-3 बार ऐसा लगा था, मैं और अठवानी बैठ के बात कर रहे थे, भाई ये क्या शहर है, हम कहाँ फंस गए. बहुत वो हो गया था कि यार क्या करें. मतलब काम आफ्टर 7 आई हैव नथिंग टू डू. मतलब वो जिम में जाके वो कर सकते हैं, बट वो 7 के बाद ऐसे कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास करने को कि यार मैं I used to write plays in college. I used to perform street plays in college. I used to perform open mics in college. वो सब एक तो that shift from Bangalore to Raipur ना, वो सब एक झटके में ऐसे stopped. है ना, सब कुछ रुक गया. सिर्फ क्रिएटिव आउटलेट था और ऐसे सब बंद हो गया. है ना. अब सीधा वही जस्ट डील विद लेबर्स और एक चीज संभालो. हालांकि माई वर्क इज रियली गुड. आई डोंट हेट माई वर्क. आई रियली लव व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू इट. बट वो क्रिएटिव आउटलेट ना जरूरी है, खासकर समवन लाइक मी जिसने जो रहा है उस स्पेस में बहुत टाइम तक. यस. तो उसका जैसे क्रिएटिव आउटलेट है ना ब्रो, मेरा आई थिंक यू वुड रिलेट. वापस आने के बाद ब्रो देयर आर जस्ट सो मेनी स्मॉल लिटिल थिंग्स जो यू मिस. कि मतलब there's just a place where you can just come chill with friends. Yeah. You know how we used to just have like games night. Yeah. And have parties and just keep talking about something new randomly and just interacting with friends and living with them. यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के साथ ही रह रहे हो. तो you need to, जैसे डे बोर्डिंग और बोर्डिंग होता है, अगर वो बोर्डिंग है तो your 1857 kind of just brings in the day boarding side of things कि तू आके यहाँ पे पार्ट टाइम बेसिस पे चिल कर सकता है आके, एंड यू कैन गेट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग एट होम. बिकॉज वापस आने का मैं तो लिटरली पागल हो रहा था. अठवानी और मेरा एक और फ्रेंड है हेमंत, ये लोग दोनों मेरे को संभाल के थक गए थे कि भाई हो क्या रहा है. कि मतलब आई यूज्ड टू फील सो आउट ऑफ प्लेस ब्रो कि किसी तीसरा चौथा कोई बंदा नहीं है जिससे जाके तुम बात कर. अजीब बातें करता था बीच में. मैंने भी की थी, ऐसा नहीं. क्या बोल रहा था मैं बता रहा हूँ. I'll tell you. So once, no, now it's been 3 years I've been working. I have this company, Unique Plant Nursery, which is solely managed by me. And I went to Hemant one day. मैं सब छोड़ के NHD का एडमिशन फॉर्म खुला है, NHD चले जाता हूँ. NSD is नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. मतलब मेरे को लिखना है, मैं यहाँ राइटर बन जाऊंगा, एक्टर जो भी. मेरे को नहीं करना रहा है, मेरे को रहना ही नहीं है. मैं घुटन हो रही है मेरे को यहाँ पे. करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया. सोच ले अठवानी एक बार, तू अभी भावनाओं में मत बह. ऐसे फॉर्म खुला हुआ था, मैं हेमंत को दिखाया था NHD का फॉर्म. तो भाई सोच ले एक बार. सेम ये वन डे ही केम टू मी लाइक, भाई मैं छोड़ के मुंबई जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है. मैं वो ऑस्ट्रेलिया से आके जो मेरे को कल्चर शॉक लगा है, मैं वो झेल ही नहीं पा रहा. मैं मेरे को भी 4 साल से लग रहा है. मेरे को क्या पता. रह जा बहुत संपत्ति. नहीं यार, बट
बहुत चीजें हो जाती है ब्रो. लोगों का माइंडसेट ही बहुत अलग है. तेको नहीं हुआ रिवर्स कल्चर शॉक आने के बाद? हाँ, एक आया होगा ना ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद, तो अनसेटल्ड फील हुआ होगा बहुत टाइम. बिकॉज before 87 before 1857 you gave a shot at multiple other things also, no? Not in Raipur. नहीं, Sydney में, and then your dad's business and everything. So I graduated in 2019. Then I came back, worked with my father. But for me, it has always been working with my father was to gain experience and understand the market. Then a really nice idea came about which did not have a viability in India. So that's why I went back to Sydney with this business idea and I started that. But something happened in family, so I had to come back during the COVID times. So took care of the business, and about 8-10 months later, then 1857 started. But in terms of the cultural shock that you're talking about, my circle had been of the people who have gone out and studied and then came back. So my interaction was limited in certain ways. So everyone was feeling the same way. To be depressed, मैं भी depressed आ जाऊँ. So the same thing happened with us also ना. जब मैं बैंगलोर से आया, I was also कि यार ये मैं कहाँ जाऊँ, मैं बैंगलोर में इतनी बढ़िया लाइफ जीता था और यहाँ पे पूरा टाइम काम करना पड़ता है. इतना मैं कॉलेज नहीं गया जितना मेरे को नर्सरी जाना पड़ता है. नाउ यू हैव टू डू इट पैसे कमाने के लिए. तो वो उसमें मैं था ही था. फिर इसका वापस आने का हुआ, मैं बोला आजा आजा आजा. एक आफ्टर पॉइंट यू हैव टू कम. इसको भी फिर वही लगने लगा जो मेरे को लगने लगा. तो हम दोनों वी वर ऑलमोस्ट ऑन द सेम. मैं बोला यू आर जस्ट मी into 2-3 years back. Are you sure about that into 2 वाला part? या क्योंकि भले मैं इससे ज्यादा एक्टिव था वो क्रिएटिव उस पे, पर वो ऑस्ट्रेलिया गया था ना. अच्छा. डिस्टेंस ज्यादा है ना और कल्चर भी बहुत ज्यादा अलग है ना. बैंगलोर इज स्टिल बैंगलोर. ऑस्ट्रेलिया में आई नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, बट होता होगा यार अलग. इतना तो नहीं होगा. खाना इसको वेजिटेरियन अच्छा मिल रहा होगा और मेरे को नहीं लग रहा कुछ फर्क. No, legit. The only thing I missed about Australia in Raipur was food. You missed Australia का खाना? Yeah. Even I missed it, bro. In terms of the variety that you have. तुम लोग क्या ऑस्ट्रेलियन कुजीन खाते थे? Australian. There's nothing called Australian cuisine, but there's so much enormous number of varieties that you have that you don't find in Raipur. Bro, मैं क्या मिस करता हूँ देखो पता है. खाना तो डेफिनेटली कि कभी भी एक बार मतलब consecutively you will never repeat the same cuisine. Never. Be it Lebanese, Thai, endless, Japanese, Mexican, metropolitan in India also. अब मैं वही बताता जो मैं मिस करता हूँ. ब्रो कितना कन्वीनियंट होता था. तू घर से निकल, तेरा जहां मन है तू पैदल चल के जा सकता है. बॉन्डाई बीच हो गया या यू जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी. जो अपने रोड्स में नीचे चेम्बर्स और ये वाला जगह था लुई दी तोरे एंड ऑल ऑफ दिस ब्रो, इट वाज सो नाइस. क्या पीसफुल लाइफ था. इधर तो तू गाड़ी के बिना कहीं नहीं निकलता होगा. नहीं. दैट्स द थिंग ब्रो. वहां पे गाड़ी की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी. मैं 5 साल रहा हूँ, मैंने गाड़ी जब भी चाहिए होती थी वी कुड रेंट इट वेरी इजीली. घर के नीचे खड़ी होती थी फॉर यू टू रेंट. You enroll with that company, you get a card. Yeah. Tap in वाला कार्ड. NFT. हाँ. And गाड़ी के अंदर ही चाबी. NFC वाला कार्ड. You get an NFC वाला कार्ड. और कार में ही वैसा वो सेंसर्स वगैरह वो मशीन लगी होती थी. You go, you do the tap it and the car opens. गाड़ी के अंदर चाबी है. Fucking go wherever the fuck you want, how much ever long you want. Super convenient and very reasonable also. मतलब मैं तो कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद तक भी स्टूडेंट प्राइसेस पे ड्राइव किया. यार बहुत सही होता था यार. बड़ा मजा आता था. मतलब हाँ वही तो वो कल्चर शॉक आया तो होगा ना देखो भी. मतलब आई अंडरस्टैंड कि तेरे सब दोस्त भी वही यार. बट अगेन I had been a very understanding person through and through, so I always knew कि of course there are changes, this is how things are here. So for me it was never about battle. I just absorb things immediately. मतलब मेरे लिए भी bro, like I've been a person who never regrets
a decision. Neither do I regret my decision right now. मेरा बस ये है कि it's so different क्योंकि आके तुमसे सबसे पहले लोग ये पूछेंगे कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे. And now you have a chip on your shoulder कि बेटा अब इतना पढ़ गया अब कुछ करके दिखाओ. हाँ. And all I want is people to just fucking leave me alone for some time कि I'll take my own sweet time ना. ऐसा नहीं कि I don't appreciate things here कि मतलब यार mom dad के साथ family के साथ time spend हो गया. यहाँ पे you have the मतलब तुम responsibilities. I'll tell you what though. And I had been saying it for years and years, and I have told this to my friends in Australia as well. I would speak about myself. I have a diamond life in Raipur. Yeah. Okay. Time and again that I have gone and met people of Sydney. I have told them, yeah, you guys don't know Raipur, but life in Raipur is diamond. Yeah, very privileged. It's very privileged, and everything is just so comfortable and convenient. Bro, how's long distance treating you, bro? I'm so happy कि कोई और भी ये चीज से जा रहा है जो मेरे को अकेले. You know ना my joke about long distance relationship. थोड़ी देर बाद आना. क्यों? He's asking me something. कैसा चल रहा है long distance? It's different. It's coming in its own ways. I wouldn't completely deny the challenges it brings. Yeah. Communication is a very important factor, and time difference. Oh my god. कितना time difference है? 5.5. Bro, मेरा भी 5.5. Bro, 5.5 ना इतना चूतिया time difference है ना, I tell you कि तेरे सबके peak hours coincide होते हैं. जब वो फ्री होगी मेरा पीक आवर रहेगा, जब उसका वो मतलब उसका पीक आवर रहेगा तब मेरा फ्री टाइम रहेगा. And you know it becomes even more difficult when you're working together because say I get into the work mode by 10-11ish, okay, and by 12 is when things are really picking up. Things are focused, things are completely focused, okay. मेरा 12 मतलब उसका 6:30 बजे सुबह, okay. एंड वो सुबह उठ जाती है जल्दी, वो कभी 5 बजे भी उठ जाएगी, वो कभी 6 बजे भी उठ जाएगी, ओके. एंड शी वेक्स अप एंड आई एम इन द वर्क मोड एंड शी इज जस्ट वेकिंग अप, सो हर माइंडसेट इज गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यहाँ मॉर्निंग बहुत आगे जा चुकी है दीदी. एंड आई एम लाइक ये फॉलो अप हुआ कि नहीं, इसका क्या स्टेटस है, ये पोस्ट हुआ कि नहीं. Right, you are in the zone. Yeah, completely. Because she is also supposed to be that person who is supposed to give me these answers. Conclude, you can just like tell us about तेरा experience कैसा था, like talking for the first time. कैसा लगा तेरे को टोटल पॉडकास्ट? तूने एक आध एपिसोड अगर देखे तो वो कैसे लगे? Definitely you are not like it's not the first or the last time you're coming. We can definitely like chill, but yeah, you can talk about your experience, wrap it up, and this time you're giving the outro. We'll tell you what the outro is. Yeah. Okay. So first I have to just tell about yeah. How was the experience like? Very casual. Yeah. Very casual. You don't have to care about what's gonna be thrown at us. It's just like a bunch of folks coming together, and just it's chill. I enjoyed it. Yeah. Yeah, that is a wrap. Let's bring this conversation to an end, and it was a wonderful conversation that we had. Absolutely. It was a pleasure talking to you. And that brings us to the outro. जाने से पहले दुनिया मादर चोद है, आप ना बने. लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, एंड सब्सक्राइब तो जरूर करे.